आरती हटो ना। आरती आवाज दो। संजय संजय आरती साइड है। बाईस का हैंडी मार रो देगा। अरे तेरे को क्या देखो क्या देखो। Digi, you want to introduce? क्या एक्सेप्टेशन से आज बियॉन्ड द क्लाउड As an Iranian, because I grew up with Mr. Majid's film, from his movie, the start, Children of Heaven, to The Rain, to Color of God. So I always expect the best from him, and I guess everyone around the world. Okay, so what do you like to say about the direction of the Majidi sir? Because his direction is known for in our industry. What do you like to say about the direction? I guess the beauty of one of the beauty of Mr. Majid's direction is he works most of the times with non-actors. I mean, to make non-actors act or be the character, that's a magic of Mr. Majid. Thank you. Thank you so much. I'm very, very excited because I've been a big fan of Majid Majidi to begin with, and I've been kind of following, since the time he came to India, and there was the news of, him trying to make a Hindi film. So I've been waiting for this for a long time, and very, very excited to see the film and Ishan. I don't know him at all, but yeah, just want to see what is created. What has he created in India? Okay, what is the one thing you like the most about the direction of Majidi? I think the simplicity of his stories, the simplicity of his characters, and I think simplicity is his USP. He just creates such beauty out of simplicity. Okay, recently your movie has been released that time. So are you happy with the response that you have got from the I'm very happy with the response that we have received. I think the critics really like the film. The audiences really like the film, and yeah, it's been a. I'm very proud to be a part of Blackmail. Actually, to be the kind of film it is, the kind of stuff we have tried to do through the film, and I'm very happy with everything the film has received. Okay, so any upcoming project after that? I have a couple of things. I've just finished shooting for my first web show called 4 More Shots Please. It's for Amazon India, and Amazon Prime, not India. And just finished shooting for it. It should be out in the next 6-7 months. I'm very, very excited about it. And I am going to start shooting for a film called Uri, which is being directed by Aditya Dhar. And I'm playing an army pilot in that, so very excited about that. Thank you.
इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं. वी हैव इंटरनेशनल डायरेक्टर इन द हाउस और उनको इंडिया पहली बार हम लोग लाए हैं और आई रियली फील प्राउड दैट ईशान हैज़ मेड हिम बिलीव इन Indian talent, and it's all in the family. I feel great that they have started exploring Hindi cinema and Indian scenario. जी. I'll be very honest. I am really blown away by the way Ishan looks so comfortable in his first film. मुझे बहुत शर्म आती है क्योंकि मैं अपनी पहली फिल्म में बिल्कुल ऐसा नहीं था और मैं तो डिलीट करना चाहता हूँ अपनी पहली फिल्म ये देखने के बाद. And it's way beyond expectations. It's actually beyond expectations. Okay, बहुत ही जल्द आपकी मूवी पल्टर रिलीज होने वाली है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि बहुत ही उम्मीदें हैं लोगों को. आपने जो बॉर्डर के बाद एक बड़ी मूवी पल्टर को कहा जा रहा है, कितने एक्सपेक्टेशन है? JP सर से जितनी एक्सपेक्टेशन करी जाए उतनी कम. He always tends to surprise everyone. And उनकी फिल्में हमेशा it comes across with a bang and it surprises people. And it's always the underdog. And again हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पुरानी उनकी फिल्में हैं उससे मिलता जुलता कुछ हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा. थैंक यू. सर आज स्पेशल स्क्रीनिंग है बियॉन्ड द क्लाउड, तो कितने एक्साइटेड है आप मूवी देखने? बियॉन्ड द क्लाउड्स. माजिद मजीदी का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, जैसे कि सब हैं, पूरा कंट्री है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि उन्होंने यहाँ की फिल्म बनाई है. आई होप वो उनकी सारी फिल्मों जैसी और मुझे पता है वैसी होगी. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं कब से वेट कर रहा था स्क्रीनिंग का. मगर मूवी में दो नए पैर भी आ रहे हैं, तो पैर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों का कहना है कि लग नहीं रहा है कि ये डेब्यू मूवी है, उनके परफॉर्मेंस और क्या कहना है? यार हम तो जब मतलब मैं भी ठीक ठाक हूँ, लेकिन जब हम बहुत यंग थे हम इतने कॉन्फिडेंट कभी नहीं थे. दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड दैट्स गुड. इट्स अ न्यू इंडिया, इट्स न्यू एक्टर्स. Okay, one thing you like the most about the direction of Majid sir? Simplicity. He is so simple and yet so powerful. Okay, तुम्हारी चीज़ों को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया आपके भी रोल को, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब मैं खोज रहा हूँ. आई होप आई विल डू समथिंग वेरी सून. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. I am actually because obviously Majid sir's films have been, the films that I've watched in film school, and obviously it has been a part of my education. So I think I'm here to see, somebody. I'm actually here to witness, part of something that I've grown up studying. So of course it's exciting, and I think I'm really looking forward to it because I also think Malvika and Ishan are very interesting as faces. I don't know how they are as actors, and it'll be interesting to see, how well they've done and how they've been molded. I'm sorry? Have you seen it? Yes, I have seen the trailer. So what is the one thing you like the most about it? I think the actors, and I think that's what holds the films together. I think most of his films are all about performance, and they're about the simplicity of just, staying with the characters. And I know most filmmakers don't do that, especially not in India, because they surround themselves with too many things and too many elements. And what really stands out in his films are the actors and, just their work. So if the performance holds true and if the performance stand out, I think for me that'll be a winner. Okay, it's a debut movie of Ishan and Malvika, but people are saying that it doesn't seem to be its debut movie because of their performance in the trailer and the movie. So do you agree with it? See, the first film is also always a first film. I mean, all of us have had a first film, and all of our first films have been very special. So it is their debut film. I don't think we should take that away from them. But having said that, I'm sure they have worked very hard on their characters, because I'm sure Mr. Majidi would have never said okay to a take if that wasn't okay. So, yeah. Okay, lastly, we have seen Lipsy Kandama after Lipsy Kandama next. You'll know what next. Anything you'd like to share to the audience? Because I wanted to see you. I don't know. Have fun. Watch the film. I'm sure it's going to be great. Watch my work. Lots of things lined up. So, yeah. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you.
I'm on way. I'm here. Hold on. Yes. Multi. Yeah. Roll. जी बहुत सारे इमोशंस हैं फ़िलहाल तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी भी है कि लोगों को पसंद आएगी या कैसे रिसीव होगा फिल्म। नर्वसनेस तो होती ही है, पहली हिंदी पिक्चर है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, तो लॉट ऑफ इमोशंस। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जी आई थिंक मेरा पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे हमने जब लंदन फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर किया था, उस टाइम पे स्क्रीनिंग के बाद एक लड़की मेरे तरफ आई एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एंड शी टोल्ड मी एंड शी लव्ड द फिल्म एंड शी टोल्ड मी कि यू नो आई लाइक दीज सीन्स, आई लाइक द परफॉर्मेंसेस एंड देन she looked at me and she was like, do you know where the actress is? You know, I want to talk to her. And I was like, she had no idea that I was one of the actors because I looked so different and I, you know, the whole film was so different. So that's a compliment, I guess. Thank you. जी एब्सोल्युटली मैं मजीदी सर की बहुत ही बड़ी फ़ैन रही हूँ। मुझे कभी लगा नहीं था कि वो इंडिया में आके फिल्म बनाएंगे और ये कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। सो इट वाज क्वाइट आई वाज वेरी शॉक्ड द फर्स्ट टाइम यू नो व्हेन आई गॉट टू नो कि आई एम अ पार्ट ऑफ हिज फिल्म। तो या इट्स एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग। आपने देखी फिल्म? प्लीज डू वॉच। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसा कॉम्प्लीमेंट होते हैं? जी ये तो मैंने अभी सुना है जब आप कह रहे हो। इससे पहले मैंने सुना नहीं था क्योंकि हम प्रमोशंस और स्क्रीनिंग्स के चक्कर में इतने बिजी थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस ही है जो फिल्म देखती है, जिन्हें फिल्म पसंद आती है, जिन्हें फिल्म पसंद आनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को फिल्म पसंद आता है। थैंक यू। How are you doing? Very good. All good? What's up? Can I go to some bites? Come. चलिए This film? हाँ, माजिद जो हैं वो बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही कमाल के फिल्म मेकर हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये जो नए एक्टर हैं हमारे ईशान, वो वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने उनका ट्रेलर भी देखा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये फिल्म देखने के लिए। फ्रेश पेयरिंग के बारे में क्या कह रहे हैं? ईशान और मालिक, इनकी केमिस्ट्री, इनकी डेब्यू मूवी है बॉलीवुड, जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपने तो अभी मुझे तो नहीं पता उनकी केमिस्ट्री कैसे होगी। अब तक तो जो भी ट्रेलर्स या जितने भी प्रमोशनल मटेरियल है उसमें तो अच्छी लग रही है, तो फिल्म देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि उनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, मगर बहुत ही अच्छी होगी। आई थिंक वो जो एक वर्ल्ड जो माजिद क्रिएट करते हैं अपने फिल्मों में, यू नो, वो बहुत ही कमाल के उनकी एक कहानी नज़र आती है वहाँ पर, यू नो, कि एक बहुत ही इंग्रॉसिंग कहानी होगी जिसमें आप घुस सकते हो, यू नो, वो आप उस कहानी में कुछ होगा, कुछ कहना चाह रहा है फिल्म मेकर, तो वो मेरे लिए सबसे इंगेजिंग बहुत ही जल्द आपकी मूवी पल्टर की बहुत ही जल्द टीजर रिलीज होने वाली है, तो कितने एक्साइटेड, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन है आपका बॉर्डर ये जो कि है पल्टर बड़ी फिल्म, तो उसके बारे में क्या कहना है? तो पल्टन, हाँ, बहुत बड़ी फिल्म है और बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं JP दत्ता साहब, और वो बहुत ही आई थिंक 6 या 7 साल बाद 8 साल बाद शायद अपनी एक नेक्स्ट फिल्म बना रहे हैं जो पल्टन है। इसकी जो स्टार कास्ट है बहुत ही यूनिक है, यू नो, बहुत ही
कमाल के कलाकार हैं और हमें बहुत मज़ा आया फिल्म बनाते वक्त। तो यही उम्मीद करते हैं जब इसकी टीज़र आएगी तो लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। वो जितनी जल्दी हो जाएगी मैं बता दूंगा आपको। I've seen it so many times. Yeah. मैं बहुत excited हूँ. Yeah, like I'm really looking forward to watch it. I'm sure it's going to be a wonderful movie, a great story. Yeah, and I'm like a big fan of Majid sir, so yeah, I'm really excited. दोनों की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है. And I'm really excited to just watch the performances. I'm sure it's going to be amazing. So yeah. Stretching. मैं figure skating कर रही थी जी. Actually पहले से मैं क्या बोलते हैं मतलब बचपन से teenager तक मैं figure skating कर रही थी, and I was in the elite in my last 3 years. So I just came back today, so I'm a little bit spaced out and jet lagged. But yeah, I just came back today from Sweden, and I was on the ice again, and it was just beautiful, like a beautiful feeling to be on the ice. I don't know how to describe it. It's just, yeah. And I really fell in love with the October theme. So that's why I was just sliding on the ice to that and remembering the old days when I used to be a figure skater. So yeah. अच्छा अभी बियॉन्ड द क्लाउड्स के बारे में पूछ लो ना. आईपीएल भी चल रहा है और मुंबई इंडियंस के दोस्त जो है हमारे पास भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं. तो आप कुछ कहना चाहोगे? That was a nice question. I'm really excited to watch the movie. Thank you. Visuals, man. Sonal. First of all, ma'am, you're looking very gorgeous as usual. Thank you. So how excited are you to watch the movie? I'm very excited. I am really looking forward to the film. You know, this is a film that has been spoken about a lot in the media, and right from the beginning, I've been very, very, curious about what it's going to be. Since it's not an Indian filmmaker, so I think he's going to bring something very, very different to the table. And I personally love watching foreign films, so I'm sure that he's made a great film. He's a very, very well-known filmmaker, Mr. Majid Majidi. And of course, Ishan is debuting from the film in the film. So yeah, I think it'll be fantastic. Okay, have you seen the trailer? Of course I have. Yeah. So what is the one thing you have liked the most out? I think just the whole look and feel of the trailer overall is very nice. I think the way they have kept it very, very real is what I like. I think it's not just me, but the audience now has kind of shifted their interest, and they like to watch films which are very real and very relatable. And I think this is something like that. Okay, if you get an opportunity to work with Majid sir, would you like to work with him? Of course, 100%. Okay, it would be an action movie or romantic if you like to work. I love romantic films, so yeah, I mean, I would love that, but I love action also, so anything that he can offer me. Okay, so we're going to see you in the Palta movie. So
how excited? Because very soon the teaser will be launching. Yes, yes. So how excited are you? What do you I'm very excited. It's a very special film because I've been a very big JP Datta sir's fan. I love the fact that he gives so much importance to, the unsung war heroes, and this film is all about that also. And I think the very few films are made about that, and we don't really see how much sacrifice they make when they're at the borders and making sure that we're all safe. And I think JP Datta sir shows it very, very beautifully, whether it's with his music or his films. So I'm very excited. Okay, after Paltan, any upcoming project you'd like to share? Because people wanted to see you, but you're very rare on this. No. I'm doing quite a lot of stuff, different kinds of stuff. I'll be hopefully doing something in the web also. Then looking at some music videos, some very interesting scripts also. But right now, Paltan is the first one that you're going to see me. Thank you. Thank you. For the visuals. Okay. Thank you, ma'am. Thanks, Sonal. You're going? Cheap, disgusting women and men. You're here? Nusrat. Center. Yeah. One more center. Center, please. Yeah, please. नुसरत एक दोनों अमित अमित चले Ma'am, today is a special screening of so how excited are you? Was it? Very excited actually. I'm unfortunately going to be missing this screening, but I wanted to come and just say hi and support everybody because I'm a mad fan of the director. His films have been so simple yet so iconic and yet so they just touch your heart. His way of telling a story and narrating a story is just so much. It's so endearing that I fall in love with every character and every moment and shot of his. So I'm actually here just to do a fan moment of saying hi, I'm a great fan, and then sort of pay money and watch the film in the theatre because I love him as a director. I think he's... I think treatment. To be able to show a story of India like this, which is again something that he does. When he picks a story of Iran, he really actually shows Iran. When he made that film about those two children, brothers and sisters, and how they were living there and doing that, I think it's his treatment of telling a story and where it belongs to is the most interesting part. Also the fact that it's based in India, तो मुझे बहुत ही उत्सुकता से देखनी है how he's seen India and is going to portray it. So yeah, my exciting day. Okay, Yeah. जैसे कि आपने कहा you are a big fan of Majid sir. So what is the one thing you like the most about Majid sir direction? The way he tells his story. For example, अगर ईरान की कहानी है तो he genuinely makes you believe and take you into like a very simple but raw Iran, and I think that vision of seeing from where people come and where the stories are from is what I love about him. He takes me in a different world altogether. So I would have to say where he bases the story and how he treats it. It for me is his best, and I love it. Okay, so would you like to work with Majid sir in future? Is that a question, guys? If you got a chance. Of course, any day. Okay, the Sonu Didi is the second movie of this year which is crossed the 100 crore, and now it's going to cross 250 crore all over India. So what's your feeling, and what kinds of comment you have got until now? All the comments are positive, yeah. Everybody, because globally it's done so well and it's done so well here also. It's just obvious that people love it, and so everything has been great. I'm loving it. Hopefully it does more business. Yeah? All right, thank you guys.
भाई क्या कैसे मेरे भाई? हाँ जी छोटी सी ले लो यार. आज के लिए कितने एक्साइटमेंट है, कितनी क्यूरियोसिटी है? I'm pretty excited. I think the promos are looking very nice, and it's a new team, so just want to wish them all the best. I think they've really worked hard towards it, and all the best to them. Yeah. ओके सर, पैर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ईशान और मालविका की ये डेब्यू मूवी है, तो क्या कहना चाहेंगे एज अ फर्स्ट मूवी? You know, I've known Ishan since many years, you know, and I always believe that he's a very, very talented boy, and the promos are looking very, very good. It doesn't look like he's a newcomer. So just want to wish him all the best, and the film should do well for him also. Okay, what do you like to say about the direction of Majid sir? I think he's a god of cinema. So really looking forward seeing his stuff. Yeah. Thank you, brother. सबको पता है सोनू भाई is responsible of wherever I am. No, or from wherever I started. मेरी पहली पिक्चर मैक्सिमम सोनू भाई ने लाई. No, man, you totally वो बाइक चाहिए. ये क्या तरीका है कि पिक्चर देखने आए बाइट पे चले गए? आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ द डायरेक्टर, सो एक्चुअली जस्ट ये फैन है कि आए और अच्छा हम किडिंग बेटर ना गो इन द थिएटर, पे मनी एंड सॉर्ट ऑफ ये वेरी अच्छा कंट्रीब्यूट टू एवरीबॉडी, यू नो. ओके, मैं गेटिंग आउट. बाय. नाइस. आई एम गोइंग टू टेक पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू लेटर. हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अरे मैं व्यूअर से नहीं आपसे पूछ रहा हूँ. थैंक्स. यार तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि माजिद मजीदी इज़ वन ऑफ द अमेजिंग मोस्ट अमेजिंग माई मोस्ट फेवरेट वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर्स. एंड एक चीज़ है जो मैंने आज तक आप लोगों को इंडिया में हमारे हिंदुस्तानी मीडिया को और जर्नलिस्ट को कभी नहीं बताई, एक बात जो मैं आज सोचता हूँ कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए. मेरे जीवन की जो शुरुआत थी एज एन एक्टर, यू नो, बहुत ना समझ, इमेजिन आज ऐसा हाल है तो समझे 10 साल पहले क्या हाल होगा मेरा. बहुत ना समझ था, बट मेरी जो शुरुआत हुई है और वो माजिद मजीदी की फिल्मों से हुई है. तो मेरी एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स आई एवर सॉ इन माय लाइफ वाज चिल्ड्रन ऑफ हेवन. एंड फिर उन्होंने उनकी कलर ऑफ पैराडाइस और माय फादर, मैं उनकी सारी मूवीज़ देखी हुई हैं एंड मैंने उनकी मूवी से बहुत कुछ सीखा है. और सबसे अच्छी चीज़ मैंने उनकी पिक्चर से सीखी है, जो एज एन एक्टर मैं ट्राई करता हूँ, उनकी पिक्चर में एक सरलता है, उनके किरदार में, उनके डायरेक्शन में, उनकी कहानियों में. सो मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि आप एक स्क्रीनिंग के लिए आते हैं, आपको अच्छा बोलना होता है. मैं बहुत ही जेन्युइनली एक्साइटेड और उत्तेजित हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ उन सबका जिन्होंने मुझे ये पिक्चर रिलीज़ होने से पहले देखने के लिए बुलाया. शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, खुश रहें. मैं जा सकता हूँ? और सवाल है तुम्हारे पास? आड़े टेढ़े सवाल पूछो कि मैं जवाब दूंगा नहीं. लेकिन आप सलमान के घर पे गए थे, कुछ मूवी के रिलेटेड? मैं एक पिक्चर देखने आया हूँ, उसका नाम बियॉन्ड द क्लाउड, वो शुरू हो रही है, मैं उसको देखने आ रहा हूँ. आई लव यू ऑल.